तो हमारे 1/21 तक के सारे फ्रैक्शन हो गए हैं। फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्जन हमने सबसे पहले सीखा है। टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, बट इतना सब करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू सिंपली रिमेंबर देम। किसी भी फ्रैक्शन को याद रखने में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई एम मूविंग। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई एम गोइंग अहेड। सो नाउ विल डिस्कस टू कॉमन टाइप्स ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। My focus is not only CAT but the MB entrance exams as a whole. So when I'm teaching any subject, I'm targeting CAT, I'm targeting CMAT, ZAT, IIFT, NMAT and everything. So that holistically आपका एक ना एक एग्जाम तो निकल ही जाएगा अगर पूरा प्रिपरेशन करोगे तो। So CAT will not ask these questions, but the exam like TIS or the exam like SNAP may ask such questions. So पहला क्वेश्चन है, इफ A salary is 10% more than B's salary, by what percent is B's salary less than A's salary? This is first question. और सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है. It says if A's salary is 10% more than B's salary, then B's salary is what percent less than A's salary? इसमें थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा. This is, ये दोनों सेम ही हैं क्या क्वेश्चन? I think there is some typing error. This is less. पहले वाले में मोर था, यहाँ पे लेस होगा और इसमें लेस की जगह मोर होगा. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा, अदरवाइज द क्वेश्चन इज करेक्ट. पहला इफ ए सैलरी इज 10% मोर देन बी सैलरी, बाय व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए सैलरी. दूसरा इफ ए सैलरी इज 10% लेस देन बी सैलरी, बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी. सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले. वी हैव टू पीपल ए एंड बी. किसी का आंसर आया क्या इसका? दो लोगों ने आंसर दिया 9.09 एंड 11.11 भी आ गया, 9.09 भी आ गया. तो लेट मी सॉल्व इट. एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेना. तो ए एंड बी टू पीपल आर देयर. ए सैलरी 10% मोर. तो 10% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए. कितना होगा? 1/10 होगा. अभी देखा था हमने. मोर के लिए हम यूज करेंगे अपवर्ड एरो, लेस के लिए हम यूज करेंगे डाउनवर्ड एरो. तो ए की सैलरी ज्यादा है तो ये वाला एरो लगा दिया. बी की सैलरी कितना कम है ये हमें बताना है. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है. विद इन सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे वो मैं बताता हूँ. जो भी फ्रैक्शन रहेगा ये न्यूमरेटर में, उसको एज इट इज उठा के यहाँ पे ले जाओ. इट इज 1. अब डिनोमिनेटर में आप दो काम कर सकते हैं. आइदर यू विल ऐड दीज टू और यू विल सब्ट्रैक्ट. अब कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है. तो whenever the value is decreasing, denominator will increase.
go. All right. Is it all right now? So we lost the connection in between. Sorry for that. First question was done, right? Second question पे आ जाते हैं अब हम. Second question is saying if A's salary is 10% less than B's salary, by what percent is B's salary more than A's salary? तो फिर से हम वही करेंगे. A की सैलरी कम है तो डाउनवर्ड एरो, B की सैलरी ज्यादा है तो अपवर्ड एरो. कितनी कम है? 10%, दैट इज 1/10. नाउ एज आई सेड न्यूमरेटर को एज इट इज इधर ले जाइए 1. डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे? वैल्यू इज इंक्रीजिंग तो डिनोमिनेटर विल डिक्रीज. ध्यान रखिएगा, उल्टा होगा हमेशा. अगर वैल्यू डिक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा. दैट मींस now we'll subtract these two. This will be 10 minus 1. This will be 1 by 9, that means 11.11. So that is how you will solve such kind of questions. Hardly 5 seconds 10 seconds लगते हैं इसमें. So let's move on to the next one. अब ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि ये सेम पैटर्न पे हैं. आई एम गिविंग यू 2 minutes each, यानी 4 मिनट दे रहा हूँ टोटल. Tell me in the chat box what answers you are getting.
Has anyone got any answer to this? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? $42.8. Let's solve the first question. It says, in the view of present global financial crisis, the finance minister decided to slash the excise duties to boost demand and propel economic growth. The excise duty on the cement was reduced by 30%. So one thing was reduced, which is excise duty by 30%. Of this present amount to boost the spending in the infrastructure, what should be the percentage increase in the consumption? Another thing is increasing. What is increasing? Consumption. So that revenue remains unchanged. So revenue is unchanged. Tax yani duty is reduced and consumption is increased. So excise duty and we have consumption. Excise duty is reduced by 30%, that is 3/10. कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा हमें बताना है. तीसरी चीज कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 3. वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो डिनोमिनेटर विल डिक्रीज. दैट मींस यहाँ पे हम करेंगे 10 - 3, दैट इज 3/7. 3/7 कैसे निकाले हमें पता है. 1/7 इज 14.28. 3/7 is 3 times of this value, yani 42.84. So that is how you can use this trick while solving different questions. अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे. इसका आंसर बताइए क्या है. किसी ने 8 बताया तो बाकियों ने 10 बताया. इधर इट इज 8 और 10. एक चीज बताइए. Anyone else who got the answer? Manas is saying 8 and Ayush is saying 10. Anyone else who got the answer? Shashank is also saying 10. So the question is, a reduction of 20% in the price of sugar enables a person to purchase 6 kilogram more. Or 240 rupees. What is the original price of sugar per kilogram? So we have price which is reduced and we have quantity which has increased, and the final expenditure is same, which is 240. So price and quantity. Price has reduced, quantity has increased. Reduced by 20%, that is 1/5. तो क्वांटिटी कितना रिड्यूस इंक्रीज हो जाएगा एज पर आवर प्रीवियस क्वेश्चन. न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 1. वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो डिनोमिनेटर विल डिक्रीज. दैट मींस 5 - 1, 1/4. तो क्वांटिटी शुड इंक्रीज बाय 1/4, लेकिन एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ इसमें? 6 किलोग्राम. हमने देखा था परसेंटेज इंक्रीज शुड बी 1/4, but actual increase is 6 kilogram. That means ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. तो 1/4 of the quantity should be equal to 6 kilogram. तो total one quantity, one मतलब 100%, that should be equal to 24 kilogram. और इसका प्राइस है 240 रुपीज. तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा? 10 rupees. So the answer to this question is 10 rupees, which is A option.
दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इतना तो समझ आ ही गया होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। प्राइस अगर 1/5 से डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी शुड इंक्रीज बाय 1/4, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बाय 6 किलोग्राम, दैट मींस 1/4 ऑफ द क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 6 किलोग्राम। If 1/4 is 6 kilogram, then total quantity should be 24 kilogram, and the price of which is 240. If 24 kilogram is 240, then 1 kilogram is 10 rupees. That is the original price per kilogram. अगर क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज द न्यू प्राइस, एक बार क्वेश्चन में ये भी आया था कि व्हाट इज द न्यू प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस था 10 किलोग्राम, वो रिड्यूस हो गया 20% से, तो न्यू प्राइस हो जाएगा 10 किलोग्राम, 10 रुपीज में से 20% कम कर दीजिए, तो 8 रुपीज आ जाएगा योर न्यू प्राइस। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर ओरिजिनल प्राइस है तो 10 रुपीज इज द आंसर, न्यू प्राइस है तो 20% कम करके यानी 8 रुपीज इज द आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। Nobody has any doubt। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने रुपी का जो सिंबल बनाया है, हु इज द पर्सन हु गेव दिस सिंबल, ये एक एग्जाम में आया था IIFT में, जीके के सेक्शन में। Who is the, what is the name of the person who gave this symbol of Indian rupee? Anyone? Don't know। किसी को नहीं पता पूरे के जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं में से? Nitesh and Manas has given the right answer, Professor D. Uday Kumar। He is the professor, or at that time he was the professor in IIT Guwahati when he gave that symbol। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो जनरल नॉलेज बढ़ानी ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। अगला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज। नया टावर चार्जिंग करने हो करो। Someone is unmuted himself, please check you are on mute। ला 76 વોલ્ટ નથી। હું તે એટલે અહીંયા 70 આવે 70 હતા આ ટકા ચપ્પલ એટલે 5 मुझे ही करना पड़ेगा म्यूट। ऑल राइट, सो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहे थे। पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ होता क्या है। तो मान लेते हैं देयर इज अ पर्सन, उसकी सैलरी है $100 और पहले साल में उसको 10% इंक्रीमेंट मिला, दूसरे साल में उसको 10% इंक्रीमेंट फिर से मिला। So what is the net increment of 2 years? ये आपको बताना। What is the net increment of 2 years in percentage terms? तो अगर देखें तो 10% से जब आप इनको इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा 110। अब जो अगला इंक्रीमेंट लगेगा वो 110 पे लगेगा, तो इसका 10% आप इंक्रीज कर देंगे, दैट मींस +11 और हो जाएगा तो 121। तो द नेट इंक्रीज इज 21%। अब इसी को आपको 2 स्टेप में ना करके अगर एक स्टेप में करना हो, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। तो इसी को अगर आपको सिंगल स्टेप में करना हो तो उसका फॉर्मूला है A + B + AB अपॉन 100। तो A क्या है यहाँ पे 10%, B भी है 10%, तो A एंड B आर परसेंटेजेस। तो अगर आपसे कहा गया कि पहले 10% इंक्रीज हुआ फिर 10% इंक्रीज हुआ,
net increase would be 10 plus 10 plus 10 into 10 upon 100. So that will be 21. The final answer will also be in the percentage. So that is the concept of percentage. अब वो ये भी कह सकता है कि पहले 10% इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 10% डिक्रीमेंट हो गया, जैसे आजकल कोरोना का टाइम में सब की सैलरी कम होती जा रही है. So if this is the case, then what is the net increment or decrement in 2 years? सेकंड सिनेरियो अगर है 10% पहले इंक्रीज हुआ फिर 10% डिक्रीज हुआ, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज? बताइए क्या आंसर आएगा? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 1% डिक्रीमेंट. तो जहां भी डिक्रीमेंट हो जाएगा वहां पे आप फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा. फॉर्मूला ये है हमारा, जहां भी डिक्रीमेंट हो माइनस कर दीजिएगा. तो 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100. तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 इज 0, 0 प्लस माइनस माइनस 1%. माइनस मतलब डिक्रीज होगा नेट, तो जितना पहले था उससे 1% कम हो जाएगा. दैट इज द आंसर. अब इसके आप प्रैक्टिकल यूसेज भी देख सकते हैं. कई बार आप शॉपिंग मॉल्स में जब जाते होंगे, अब तो खैर मॉल्स बंद ही हो गए हैं, बट पहले जब जाते होंगे तो ऐसा कुछ लिखा रहता है वहां पे 50% प्लस 40% ऑफ. दैट इज नथिंग बट सक्सेसिव डिस्काउंट. तो इसमें भी आप यही वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा. तो बताइए मुझे, अगर किसी ने स्कीम चलाई हुई है 50 प्लस 40 ऑफ, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट ही इज ऑफरिंग? यू कैन यूज द 110%, मतलब फ्री में सामान ले जाओ और 10% पैसे हमसे ले जाओ. ऐसा कौन स्कीम चलाएगा भाई? डिस्काउंट है ये डिस्काउंट. मैंने अभी बताया था जहां पे डिक्रीमेंट होगा फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा. तो -50 -40 प्लस -50 इंटू -40 अपॉन 100, ये बनेगा फॉर्मूला. माइनस इसलिए क्योंकि डिस्काउंट है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी. -50 -40 -90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 इंटू 4 20, तो -70. That means net discount he is offering is 70% on the product. तो ऐसा वो लिखते इसलिए हैं क्योंकि 50 प्लस 40, जिसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, he will think that 50 plus 40 मतलब 90% डिस्काउंट है, which is incorrect. The actual discount here is 70%. So that is the concept of successive percentage change. इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. These are the questions. अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं बता देता हूँ. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग the length of a rectangle is increased by 20%, breadth is increased by 10%. What is the percentage increase in the area? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. जहां भी 2 नंबर का आपको प्रोडक्ट दिया होगा वहां पे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं. ध्यान रखिए. तो कह रहा है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई 20% से, ब्रेथ इंक्रीज हो गई है 10% से, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा वो बताना है. सो दिस विल बी 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100. तो 20 प्लस 10 30 प्लस 2 32%. So simple, is as simple as that. You need not to do anything. Successive percentage change का फॉर्मूला.
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Second question is saying if the price is increased by 20%, by what percent the consumption must reduce to keep the expenditure constant. अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो आप जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले, ये वाला तरीका इससे कर सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ 20% से 1/5, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो जाएगा 1. वैल्यू इज डिक्रीजिंग, सो डिनोमिनेटर विल इंक्रीज 1/6. So 16.66. This is one way to solve it. But because we are discussing successive percentage change, तो मैं इससे भी बता देता हूँ कैसे होगा. Price and consumption और expenditure होता है price per unit into number of units consumed. That is expenditure. जितने यूनिट हमने कंज्यूम की into per unit price से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा. और अभी मैंने बताया था जहां भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वहां पे हम यूज कर सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. तो वगैरह एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, यानी ये चीज तो रहेगी 0%. प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, so that is 20%. then by what percentage the consumption must reduce. रिडक्शन हो रहा है तो माइनस x% मान लेते हैं इसको, प्लस 20 इंटू माइनस एक्स अपॉन 100. तो ये फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं. 20 इंटू 5 x प्लस एक्स अपॉन 5 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 20. दैट विल बी 5 प्लस 1 6x बाई 5 इक्वल टू 20. x आ जाएगा 100 अपॉन 6, दैट इज 16.66%. तो या तो आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, ये तो सबसे सिंपल है. अदरवाइज यू कैन यूज अल्टरनेटिवली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या आंसर आएगा. Minus is saying 15.4. Anyone else who got the answer? Price increase by 30%. कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 10%. तो सेम यही वाला फंडा आप लगाएंगे. एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग बाय 10%, तो 10 इक्वल्स टू प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 30%. 30 कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो माइनस कितना रिड्यूस होगा हमें पता नहीं है, वही निकालना है. तो प्लस 30 इंटू माइनस एक्स अपॉन 100. तो अगेन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड. तो मेजरली देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. उसके अलावा देयर आर सम मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे. तो अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि कैट में स्पेशली आए हुए हैं. Now all the questions from now onwards are actual CAT questions. तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए एक बार. ये कैट में नहीं आया था, ये स्नैप या एनमैट में किसी में आया. इसके बाद के सारे कैट के बताइए. Anyone who got the answer?
is given 2, 3. All right, I am starting with the solution now. I hope सबने एक बार try कर लिया होगा. The question is saying Ajay loses 20% of his money. After spending 80% of the remainder, he is left with 4,500 rupees. How much money did he have initially? हम मान लेते हैं initially उसके पास total money थी 100x. परसेंटेज में जब भी कोई चीज assume करें उसके साथ 100 अटैच कर लेना. It will make your calculation easier. तो हमने मान लिया 100x था. हम इसको x भी मान सकते थे but it will unnecessarily create difficulty. तो मनी हमने assume कर लिया 100x. अब he lost 20% of it. तो रिमेनिंग कितना बचा? 100 में से 20 चला गया, 80x बच गया. आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर था 80x, इसका उसने 80% स्पेंड कर दिया, यानी 4/5 इज गॉन. 80% इज 4/5, तो बचेगा कितना? 1/5. तो 1/5 बचा हुआ है उसके पास, यानी 1/5 ऑफ 80x. व्हाट इज लेफ्ट? दैट मींस उसके पास 16x बचा हुआ है. नाउ ही इज लेफ्ट विद 4,500 रुपीज. तो ये जो 16x है वो ये कह रहा है कि इट शुड बी इक्वल टू 4,500. तो x कितना होगा? 4,500 अपॉन 16. हमारी टोटल मनी थी 100x, तो टोटल मनी कितनी होगी? 100x. दैट शुड बी इक्वल टू 4,500 इंटू 100 अपॉन 16. 4 इंटू 4, 4 इंटू 25, 4 इंटू 25. कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था 25 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो आई होप यू विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट टू द राइट आंसर. करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताइएगा, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन. All right, this is the next question. I am giving you 2 minutes to solve it, and then we'll start with the discussion. Minus options are given: 2/11, 1/4, 1/3, and 3/4. 25%, 1/4. So 2 people are saying B option, 1 person is saying D option, और बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि कब मैं स्टार्ट करूं. All right, let me start now. The question is saying 40% of the employees of a certain company are men. 75% of men earn more than 25,000 per year. If 45% of the company's employee earn more than 25,000 per year, what fraction of the women employed by the company earn less than or equal to 25,000 per year? Now we have multiple things here. सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है men and women.
unless it is specifically mentioned in the question, we'll assume that there are only two genders. तो वो कह रहा है 40% of the employees are men. तो total employee हम मान लेते 100 थे. Out of these 40 are men, तो 60 women हो जाएंगी. Now there are two categories. One who is earning 25,000 plus, and other category is who is earning less than or equal to 25,000. These are the two categories. उसने कहा 75% of the men earn more than 25,000. तो पहली कैटेगरी में there are 75% of the men. 75% मतलब 3/4, क्योंकि 1/4 होता है 25%, तो 3/4 is 75%. Of which value total men कितने हैं 40. That means ये आ जाएगा 30. उसने कहा 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन 25,000. तो यहाँ पे हमने 40 जो थे टोटल मेन उनका 75% ले लिया, विच इज 30. दे अर्न 25,000 प्लस. तो यहाँ पे बचेगा 10, क्योंकि टोटल थे 40, उसमें से 30 इधर आ गए, तो नीचे बचेगा 10. अब आगे और एक चीज कही गई कि 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज, कंपनी के एम्प्लॉय थे 100 हमने अज्यूम किया था. परसेंटेज में जब भी कुछ अज्यूम करना है तो मैंने बोला था 100 इज अ सेफ बेट. तो इसमें से 45 अर्न मोर देन 25,000, यानी टोटल एम्प्लॉइज का 45 विल अर्न मोर देन 25,000. उसमें से 30 तो मैन है, अभी हमने देखा था. टोटल 45 है, तो विमेन कितनी बचेंगी 15 बचेंगी. टोटल विमेन थी 60, उसमें से 15 इधर आ गई, तो नीचे कितनी बचेंगी 45 यहाँ बच जाएंगी. So that is how we completed this table. अब वो कह रहा है कि what fraction of the women employed earn less than or equal to 25,000. तो less than equal to 25,000 में कितनी women है 45. टोटल women कितनी है 60. So that will be 15 into 3, 15 into 4, 3/4, option number 4. तो परसेंटेज के क्वेश्चन जब भी आएंगे, you need to use your logic and simplify it as much as you can. तो कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन हमने नहीं करी है, सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू एडवांस लेवल क्वेश्चन. ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है. लेट्स सी इफ यू कैन गेट टू द आंसर. अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes. बताइए जल्दी क्या आंसर आएगा. Anyone who got the answer?
Are you guys doing it or shall I start with the solution? I'm giving you 1 extra minute. इसके बाद I will start because we are already at the finishing line. Okay, let me start now. The question is saying that number of votes not cast for Praja Party increased by 25%. In the national general elections, were those not cast for it in the previous assembly polls. तो दो टाइप के इलेक्शन है यहाँ पे, पहला नेशनल जनरल इलेक्शन है और एक थे असेंबली पोल्स. And the Praja Party lost by a majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. तो असेंबली पोल्स में प्रजा पार्टी जो थी वो जीत गई थी और नेशनल जनरल इलेक्शन में वो हार गई है. दैट इज गिवन. If a total of 2,60,000 people voted each time, how many voted for the Praja Party in the assembly election? तो दो टाइप के इलेक्शन है. सबसे पहले हुए असेंबली इलेक्शन, उसके बाद हुए हमारे नेशनल जनरल इलेक्शन. तो हमारे पास फॉर और अगेंस्ट दो टाइप के वोट हो सकते हैं. यहाँ पे भी फॉर और अगेंस्ट दो टाइप के वोट हो सकते हैं. तो हम मान लेते हैं कि असेंबली इलेक्शन में उनको फॉर में x वोट्स मिले. टोटल वोट्स थे 2,60,000. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आई एम टेकिंग इट एज 260. जो बाद में आंसर आएगा उसमें हम 3 0 ऐड कर लेंगे. अभी हम 260 लेके चलते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे. तो अगर फॉर में x है तो यहाँ पे हो जाएंगे 260 माइनस x. अब सेकंड वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, हम मान लेते हैं फॉर में y वोट्स. यहाँ पे भी टोटल थे 260, तो अगेंस्ट में कितने हो जाएंगे 260 माइनस y. तो ये हमें सिचुएशन दी गई है. अब इसके बाद दो कंडीशंस है. एक तो उसने कहा है कि this one, Praja Party lost by a majority twice as large as that it had won the assembly polls. और एक चीज ये कही कि 25% इंक्रीज हुआ क्या, जो अगेंस्ट के वोट्स थे. तो ये दो चीजें उसमें दी गई हैं. तो दोनों को ले लेते हैं एक बार. सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, प्रजा पार्टी लॉस्ट द मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज बाय व्हिच इट हैज वन द असेंबली पोल. तो यहाँ पे वो कितने मार्जिन से जीती होगी. फॉर माइनस अगेंस्ट वाले वोट्स कर दीजिए. अगर जीती है तो 4 के वोट ज्यादा होंगे, तो x माइनस 260 माइनस एक्स ये रहा होगा. और वी कैन से x माइनस 260 प्लस एक्स. माइनस है बाहर ब्रैकेट के तो प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x माइनस 260. इधर मार्जिन क्या रहेगा 4 माइनस अगेंस्ट. अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो मार्जिन होगा 260 माइनस वाई माइनस वाई. दैट मीन्स 260 माइनस 2y. और उसने कहा है कि दिस मेजॉरिटी इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर वन. so we can say this value is twice of this value. ये हमारी इक्वेशन बनेगी. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं.
2x माइनस 260, ये आ जाएगा 130 माइनस वाई। इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये होगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 260 प्लस 130 390। दिस इज वन इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट मतलब अगेंस्ट वाले फॉर द प्रेशर पार्टी इंक्रीज बाय 25%। तो यहाँ पे जितने अगेंस्ट के वोट्स थे इसमें 25% और बढ़ गए, यानी पहले अगर 1 थे तो 25% यानी 1/4 और आ गया, तो दैट मीन्स 5/4 हो गए। So that means 5/4 of the first value 260 minus x should be equal to 260 minus y, क्योंकि इस वैल्यू में 1/4 और ऐड कर देंगे तब जाके सेकंड वाली वैल्यू आएगी। तो 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 ऑफ फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, तो ये हो जाएगा। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कल ही मैंने एक मेथड बताया था 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस नंबर का हाफ कर दीजिए, 130 इंटू 10 कर दीजिए माइनस 5x, यहाँ से इसको ले जाते हैं 1040 माइनस 4y, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 260। y की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए, y हो जाएगा 390 माइनस 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 260। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन? हंड्रेड। हंड्रेड कैसे आया? Are you sure it is 100? My pen is not working. I don't know why. One 40. So Sonia is getting 140. My pen has stopped working, so I'm not able to write anything. Let me reconnect and join again.
All right, I'm back again. I think now it is working. Yes. Where were we? We were here. तो यहाँ से x की वैल्यू 140 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. Why are you saying it is 100? This value will be equal to 140. एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशंस में तो कोई मिस्टेक नहीं है. और क्योंकि हमने 3 जीरो बाद में रखने के लिए बचा ली थी तो 140 इंटू 1000 सी ऑप्शन विल बी द आंसर. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अभी के. इसको एक बार ट्राई करिए. देन वी हैव एक्सटेंडेड द सेशन बाय 15 मिनट्स. लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए. देन विल कॉल इट फॉर द डे. ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले कैट 97 में आया था. देन इट वाज आस्क्ड इन कैट 2001. उसके बाद हर एक एग्जाम ने इसके अलग अलग वर्जन्स अपने एग्जाम में दिए. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेजेस. तो इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा. Anyone who is able to get to the answer? So one person got 2.5. In fact, all of you got 2.5. So let me solve this question once again. It says fresh grapes contain 90% water, while dry grapes contain 20% water. What is the weight of the dry grapes obtained from 20 kilogram of fresh grapes? So we have fresh grapes 20 kilogram. It contains 90% water. तो जो बाकी बचा 10%, that should be some dry material pulp. 20 किलोग्राम का 90% होगा 18 किलोग्राम. 10% होगा 2 किलोग्राम. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि ये जो फ्रेश ग्रेप्स थे इसको ड्राई कर दिया गया है एंड वी गॉट ड्राई ग्रेप्स. these are obtained from these fresh grapes only. तो इन्हीं फ्रेश ग्रेप्स को ड्राई करके हमें ड्राई ग्रेप्स मिल गए. उसमें we have 20% water and 80% जो बचेगा वो पल्प बचेगा. फिर अब ड्राई करने से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पल्प पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये अगर पहले 2 किलोग्राम था तो अभी भी 2 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि फ्रेश ग्रेप्स को अगर आप ड्राई करेंगे तो उससे सिर्फ वाटर पे इम्पैक्ट आएगा. ड्राई मटेरियल तो जो पहले से था वो सेम ही रहेगा. दैट मीन्स 80% इक्वल्स टू 2 kg. 80% मतलब 4/5. दैट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम. तो टोटल वन फ्रैक्शन कितना होगा, 2 into 5/4 which is 2.5 kilogram. So that is your answer. So let me know if you have any doubt in this question. We have come to the end of this session now. हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार वो चेक कर लेते हैं. Someone is asking me to repeat. फ्रेश ग्रेप्स थे हमारे पास 20 किलोग्राम,
उसका कॉम्पोजिशन था 90% एंड 10%। 90% वाटर और जो बाकी बचा वो पल्प। 90% दैट इज 18 किलोग्राम, 10% दैट इज 2 किलोग्राम। फ्रेश ग्रेप्स को हमने ड्राई करके बना लिए, ड्राई ग्रेप्स यहाँ पे आ गए अब हम। उसका कॉम्पोजिशन है कि उसमें 20% वाटर है। 20% वाटर दैट मीन्स 80% पल्प बचेगा। और क्योंकि सेम फ्रेश ग्रेप्स से हमने ड्राई ग्रेप्स बनाए और इसमें 2 किलोग्राम पल्प था, तो जो ड्राइंग आउट का प्रोसेस हुआ है उसमें पल्प पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट आएगा सिर्फ इस पे, वाटर विल इवेपोरेट। तो अगर ये पहले 2 किलोग्राम था तो ये अभी भी 2 किलोग्राम ही बचेगा। एंड विच इज इक्वल टू 80%। 80% यानी 4/5। If 4/5 of some value is 2 kilogram, then the total value 1 मतलब 100%, it is 2 into 5/4, which is 10/4, 2.5 kilogram. I hope now it's clear. So this is what we have discussed in this session. We started with different fractions, 1/21 तक आपको याद हो जाने चाहिए सर। Then we solved 2 type of percentage questions. Then we did some practice question. The another concept was successive percentage change, and finally we did the previous year papers question. In questions की PDF I will send to you on the group by tomorrow. And now we'll meet again in the next class, जो कब होगी वो मैं आपको बता दूंगा on the group itself. कल नहीं होगी, either we'll have it in the midweek or we'll directly have it in the next weekend. So that is all from my side in this class. We'll meet again in the next one.